Let's do Brahmanad. Om. Om. Shanti. 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 Swastha. Good morning student. Previous class I discussed about hybridization, condition for hybridization, characteristics, types of hybridization. At first I discussed about the Sp² hybridization. In Sp³ hybridization we generally discussed about the formation of CH4 molecule. This is the structure of CH4 molecule. In CH4 molecules there are 4 carbon hydrogen sigma bond. The 4 carbon hydrogen sigma bond is directed towards the 4 corner of a tetrahedral geometry. So the shape of CH4 molecule is tetrahedral. The other example of Sp³ hybridization are CCl4, NH4+, etc. Now I want to explain about the Sp² hybridization. For Sp² hybridization, generally we require 1 s orbital, 2 p orbitals. When 1 s orbital and 2 p orbitals intermixed and reorient to give 3 new hybrid orbital, then the process is called Sp² hybridization, and the newly formed hybrid orbital are called Sp² hybrid orbital. Sp³ hybridization केस रे आम पाखे 4टी Sp³ hybrid orbital थिला. ताको आमे एमिति टेट्राहेड्रल रूपे सजौथिले. यार कारण थिला टू गेटिंग द मिनिमम रिपल्सन. वर्तमान Sp² hybridization केस रे पिले आम पाखे 3टी hybrid orbital अछि. भाबी दियो ए 3टी मार्कर 3टी hybrid orbital आमे केमिति सजेले हमको मिनिमम रिपल्सन मिलेबो. मिनिमम रिपल्सन मिलबा पई हेले हमको 90 डिग्री रो एभव करिबा दरकार. 90 डिग्री थारो कम हेले बेसी रिपल्सन. बर्तमान देखो गोटे पिला 3टी हाइब्रिड ऑर्बिटल को एमति नै सजेबो. एंगल केते हेला बेले 90 डिग्री एबी 90 डिग्री हेला. आ गोटे पिला कहबो नै मु एमिति 3टा हाइब्रिड ऑर्बिटल को सजेबी. जा फल रे एंगल केते हो एभव 90 हो, जोटा कि देखो एटे 120 डिग्री एंगल क्रिएट हो. फर्स्ट केस रे पिले एमती सजाय थिला 90 डिग्री होतिला. सेकंड केस रे गोटे पिला एमती सजाइबो जाहले एभव 90 डिग्री रहबो, जोटा कि हमें 120 डिग्री 120 डिग्री होछि बोली हमें कंसीडर करिया. तो फर्स्ट केस रे रिपल्सन रहबो, सेकंड केस रे रिपल्सन आटिके कमिबो. तेनो 3टी जो हम पाखे हाइब्रिड ऑर्बिटल अछि से 3टी हाइब्रिड ऑर्बिटल को हमें एमती सजेवा दरकार. यदि हमें एगुडा हमें इनदी जॉइन करिबा, ए पॉइंट रो ए पॉइंट जॉइन करिबा, ए पॉइंट रो ए पॉइंट जॉइन करिबा, ए पॉइंट रो ए पॉइंट जॉइन कले गोटे ट्रायंगल मिलिबो बिले. तेनो ई जो 3टी Sp² हाइब्रिड ऑर्बिटल अछंदी से माने गोटे ट्रायंगल रो 3टा कॉर्नर को डायरेक्टेड हेकी रहबे. जा फल रे Sp² हाइब्रिडाइजेशन जो मॉलिक्यूल बा आयन रे होतिबो तार स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लानर हबो. इदिला तमरो Sp³ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मानकर अरेंजमेंट. वर्तमान मो पाखरे 3टी Sp² हाइब्रिड ऑर्बिटल अछि. ताकू मु जदी अरेंजमेंट करबी तल केमति करबी. येला गोटे हाइब्रिड ऑर्बिटल, येला तमरो सेकंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, येला तमरो थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल. एटा आगे जदी जॉइन करबा ताले इट मेक ए ट्रायंगल. एटा एंगल केते हो बिले तमरो 120 डिग्री हो. अगर हमें एमती जदी बॉन्ड लाइन जरा जदी अरेंजमेंट करबा ताले केमति देखा जो. ये ला गोटे लाइन, ये सेकंड लाइन, ये ला
third line. It is angle of 120 degree. This hybridization is also called triangular planar hybridization because the three sp² hybrid orbital are directed towards the three corner of a triangle. एठारे केतोटी s orbital बिले गोटे s orbital दुईटी p orbital टोटल तीनोटी orbital हला बिले सपोज तीनोटी orbital को हमें यदि 100% नबा गोटे orbital केते मिलियो बिले 33.33% मिलियो s orbital गोटी नियाई तेनो ए sp² hybrid orbital रे percentage of s character यदि बाहर करिया ताले 33.3% आसीबो ए जो sp² हाइब्रिड ऑर्बिटल रे दुईटी p ऑर्बिटल शेयर करा जायछि तेनो टोटल यदि परसेंटेज p कैरेक्टर बाहर करिवा ताले हम केमति बाहर करिवा 2 into 33.33 equal to 66.66 जोड़ा के हमें 66.67 बोली नहीं था तेनो इन sp² हाइब्रिड ऑर्बिटल द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज 33.3%. The percentage of p character is 66.67%. Next, I will explain the sp² hybridization by taking an example. Suppose I want to think about the formation of BCl3 molecule. The atomic number of boron is 5. The electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p1. तेणु पिले आमे फर्स्ट रे एनर्जी लेवल ड्रा करिया तापर एडी कोन लिखा पिले बोरोन एटम रो ग्राउंड स्टेट लिखिबा दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फiguration ऑफ बोरोन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कन्फiguration इट इज क्लियर दैट one s orbital having 2 electron so this is your 2 electron 2s orbital having also 2 electron so this is your 2 electron present in the 2s orbital. The 2p orbital having 1 electron, so here I can write only 1 electron. माने रखो पिले यदि गोटे ऑर्बिटल रे गोटे इलेक्ट्रॉन अछि ताले से ऑर्बिटल रे थिबा इलेक्ट्रॉन सबले क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे रोटेशन करिवो यदि दुईटी इलेक्ट्रॉन अछि ताले गोटे क्लॉकवाइज रे रोटेशन करिवो गोटे एंटी क्लॉकवाइज रे रोटेशन करिवा को बाध्य दुईटी इलेक्ट्रॉन मध्य यदि गोटे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रे रोटेशन करला नाही अन्य गोटे एंटी क्लॉकवाइज रे रोटेशन करला नाही दीटा को गोटे डायरेक्शन रे रोटेशन करिवे ताले एटम रो स्टेबिलिटी लॉस हो तण मन रखो बिले गोटे ऑर्बिटल रे गोटे इलेक्ट्रॉन थिले सबले क्लॉकवाइज रोटेशन होइताय दुईटी इलेक्ट्रॉन थिले गोटे क्लॉकवाइज रोटेशन आ गोटे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होइताय एटा दारा क्लॉकवाइज रोटेशन रो सिंबल एटा जे क्लॉकवाइज ये दारा एंटी क्लॉकवाइज नेक्स्ट स्टेप बेला बेले हमको sp² हाइब्रिडाइजेशन करिवा पड़िबो sp² हाइब्रिडाइजेशन में गोटे s ऑर्बिटल दुईटी p ऑर्बिटल आवश्यक पड़िताय आ से तीनोटी ऑर्बिटल गुडा का हाफ फील्ड हवा दरकार देखो बेले एठारे 2s ऑर्बिटल वैलेंस शेल अछि आ 2s ऑर्बिटल रे दुईटी इलेक्ट्रॉन अछि तनु ये वर्तमान सुइटेबल कंडीशन रे नाही एठारे गोटी 2p ऑर्बिटल अछि जे कि हाफ फील्ड अछि हमको आउरी गोटी हाफ फील्ड वाला 2p ऑर्बिटल दरकार तेणु कोन करा जे बेले 2s रो गोटे इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल को एक्साइटेड करा जिवो ये थिला बेले कार्बन रो एक्साइटेड स्टेट बर्तमान हमको एठारे बोरॉन रो लिखियो पड़ियो बोरॉन रो एक्साइटेड स्टेट कोन बेले 1s रे दुईटी इलेक्ट्रॉन जेमि थिला एटा मध्ये दुईटी इलेक्ट्रॉन रहबो एठा गोटे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराबो एठी की तेणु हमको एठारे दुईटी इलेक्ट्रॉन रखियो पड़ियो ये हला तमरो बेले बोरॉन एटम रो एक्साइटेड स्टेट नेक्स्ट स्टेप रे कोन करिया बेले ना 2s ऑर्बिटल रो एनर्जी को 2p रो दुईटी ऑर्बिटल एनर्जी इंटरमिक्स कराबो पुणी रीओरिएंट कराबो रीओरिएंट कला परे बेले हमको 3 sp² हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेबे एटा हमरो कार्बन रो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थिला तेणु हम एठारे कोन लिखिया बेले sp² हाइब्रिड ऑर्बिटल आउ तीनोटी sp² हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलिबो आ से तीनोटी sp² हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ फील्ड थिबे देखो बेले ए जो ऑर्बिटल टी हमर हाइब्रिडाइजेशन रे पार्टिसिपेट कला नहीं तेनो ये ता पोजीशन रे रही जिवो
ए दुईटी ऑर्बिटल एनर्जी इंटरमिक्स होगी तेणु एमानकर एनर्जी परवर्ती समय समान रहे तेणु आम ये जो तीनोटी ऑर्बिटल को गोटे पोजिशन रखिलु आ जो ऑर्बिटल टाको ओरिजिनली सी जो पोजिशन थिला से पोजिशन रे रखि दिया जिवो कारण आर एनर्जी इंटरमिक्स करा जाय नै आर एनर्जी जेमति सेमति अछि हमको sp² हाइब्रिडाइजेशन करिया गले दुईटी p ऑर्बिटल गोटे s ऑर्बिटल रो एनर्जी इंटरमिक्स करिया पड़ी थाए तेणु ये दुईटा को मु तळको आनली एटा को नै ऊपर रखिली मन रखले ये जो तीनोटी हाइब्रिड ऑर्बिटल अछि ए तीनोटी हाइब्रिड ऑर्बिटल एनर्जी लेवल आ एनर्जी लेवल भितरे रहबो यदि गोटे पिला ए तीनोटी हाइब्रिड ऑर्बिटल को मन इच्छा रखला ए तीनोटी हाइब्रिड ऑर्बिटल को तळको आन देला नले आ सहित समान कला नले आ सहित समान कला ताले कंप्लीटली डायग्राम टे भूल हे जिवो किबा ए जो ऑर्बिटल टी ए एनर्जी लेवल रो प्राय अप्रोक्सीमेट पाखा पाखी यदि न रखला ताले डायग्राम भूल हो एटा एनर्जी लेवल दिया है माने ये जो सब पॉइंट निर्दिष्ट एनर्जी लेवल शो करेगा दिस इज योर हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ बोरॉन एटम नेक्स्ट स्टेप रे हम कम करिया पड़ियो गले ना ये हला तहन गले बोरॉन रो तीनोटी sp² हाइब्रिड ऑर्बिटल बोरॉन ए सेंटर तहन रहबो ए बोरॉन तीनोटी sp² हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्लोरीन रो एटॉमिक ऑर्बिटल हेड एंड ओवरलैपिंग करी बोरॉन और क्लोरीन मध्य सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हवा क्लोरीन रे जदि हम इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन करिया ताले आसे कोन 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3pz1 this is the electronic configuration of chlorine हाइड्रोजन रो इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन कोन बिला गले 1s1 तेनो CH4 मॉलिक्यूल आमे जते फॉर्मेशन गले सेतले 1s ऑर्बिटल को नै कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन को हेड एंड ओवरलैपिंग करथिले वर्तमान क्लोरीन केस रे बिले ये ओवरलैपिंग करियो 3pz1 ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करियो कारण 3pz ऑर्बिटल हाफ फील्ड अछि आ वैलेंसी शेल तेणु 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल को आनी sp² हाइब्रिड ऑर्बिटल सहित हेड एंड ओवरलैपिंग करिबा 3pz ऑर्बिटल विषय रे जदि हम कहबा 3pz ऑर्बिटल रो डबल शेप रहबो जोटा कि z एक्सिस ऊपर रहबो ए जो 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल को आनी ए जो तीनोटी sp² हाइब्रिड ऑर्बिटल अछि ता ऊपर हमें ओवरलैपिंग करबा को पड़िबो पिले मन रखो क्लोरीन रो ई 3pz ऑर्बिटल रे हाइब्रिडाइजेशन रे भाग नै तेनो एटा सिंपली हम खाली एटॉमिक ऑर्बिटल बोली कहबा मन रखो पिले गोटे मॉलिक्यूल रे सबले सेंट्रल एटम ही हाइब्रिडाइजेशन जाय तार सराउंडिंग एटम गुडा को हाइब्रिडाइजेशन जाय नै कारण से मानकर किछि प्रॉब्लम होई न थाय वर्तमान हमें 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल को एमदी हेड एंड ओवरलैपिंग करबा एटारे दुईटी इलेक्ट्रॉन को एटा होची ओवरलैपिंग रीजन यो जी तार 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन सेही परे अन्य गोटे क्लोरीन रो 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल को एमदी ओवरलैपिंग करबा यो जी ओवरलैपिंग रीजन एटारे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अछि यो जी 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल और क्लोरीन एटम सिमिलरली बिले एठ मध्य गोटे 3pz एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करा जिवो एठारे दुईटी इलेक्ट्रॉन रहबो यो जे ओवरलैपिंग रीजन यदि हमें बोरॉन ट्राइक्लोराइड स्ट्रक्चर देखिबा ये हला पिले बोरॉन ट्राइक्लोराइड स्ट्रक्चर ए जो ओवरलैपिंग ए बॉन्ड को इंडिकेट करबा ए ओवरलैपिंग ए बॉन्ड को इंडिकेट करबा ए ओवरलैपिंग ए बॉन्ड को इंडिकेट करबा एठारे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ए बोरॉन ट्राइक्लोराइड 3 sigma bond रहबा और से 3 sigma bond is formed by the head and overlapping of sp² hybrid orbital of boron and 3pz orbital of chlorine atom. You can think about the other example that is your BF3. In case of BF3, the boron atom also exists sp² hybridization. This is all about your sp²
sp² hybridization. Next I will explain about the sp hybridization. For sp hybridization we need one s orbital and one p orbital. After sp hybridization, generally we think about two hybrid orbital. The two hybrid orbital are two sp hybrid orbital. These two hybrid orbital are called sp hybrid orbital. sp² hybridization केसे एमती तीनोटी sp² hybrid orbital को अरेंजमेंट कराइला. बर्तमान sp hybridization केसे हम पाखरे दुईटी hybrid orbital अछि. से दुईटी hybrid orbital को यदि हमें एमती सजेबा माने एंगल 180 डिग्री सजेबा ताहले मिनिमम रिपल्सन हबो पिले. तेणु आमे जो sp hybrid orbital अछि ताको आमे केमती अरेंज करि रखिबा. ये ला गोटे sp hybrid orbital. एटा हमर सेकंड sp hybrid orbital. इधर एंगल होज पिले 180 डिग्री. आको आमे यदि लाइन डायग्राम ड्रा करिया ताले केमती आसीबो. यो जे सेंटर ये गोटे लाइन ये गोटे आउट लाइन एंगल के देला पले 180 डिग्री. Then what will be the definition of sp hybridization? When one s orbital and one p orbital intermix and then reorient to give two sp hybrid orbital, then the process is called sp hybridization. In sp hybridization, the two sp hybrid orbital are arranged in a linear manner. So sp hybridization is also called linear hybridization. In sp hybridization, the total number of orbital participate in the hybridization are 2. For 2, suppose this is your 100%. For 1, this is your 50%. So the percentage of S character in sp hybrid orbital is your 50%. The percentage of p character in sp hybrid orbital is also 50%. Let me explain the sp hybridization by taking an example. Suppose I want to think about the formation of BCl2 molecule. The atomic number of beryllium is your 4. The electronic configuration is your 1s2, 2s2, 2p, 0. According to the electronic configuration of beryllium, it is bound to write here 2 electron, here also 2 electron, here no electron is present. This is your said to be ground state of beryllium atom. For sp hybridization, we need one s orbital and one p orbital. The two hybridizing orbital must be half-filled. Look at that, here 2s orbital is full-filled, so it is bound to make half-filled. Here no one of the p orbital is half-filled, all are empty orbital, so it is bound to shift one electron from 2s orbital to 2p orbital. That means I can write the excited state of beryllium atom like this. Here 2 electron, here 1 electron, here 1 electron present. We cannot write this electron. Now this p orbital and this s orbital undergoes hybridization to form two sp hybrid orbital. एठारे बिले दुईटी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑन हाइब्रिडाइज हेकी रहइबो. तेनु आमे लिखि पारे एटा को ऑन हाइब्रिडाइज्ड orbital. This is the hybridized state of beryllium atom. बर्तमान आमे beryllium chloride formation करिवा. Here two hybrid orbital of beryllium are placed like this. Here beryllium atom is present. The electronic configuration of chlorine is your 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p, x2, 3p, y2, 3p, z1. This is your sp hybrid orbital of beryllium atom. A sp hybrid orbital को 3p z atomic orbital head and overlapping करिवो. तो आमे केमति ड्रा करिया like this.
This is the overlapping region. This is said to be 3pZ atomic orbital of chlorine. This is also 3pZ atomic orbital of chlorine. This is your sp hybrid orbital. Here the satellite of beryllium is present. This overlapping is represented by this sigma bond. This overlapping is represented by this sigma bond. The bond angle is your 180 degree. The structure of BCl2 is linear. In beryllium, 2 sigma bond is present between beryllium and chlorine atom. This sigma bond is formed by the hidden overlapping of sp hybrid orbital of beryllium and 3pZ orbital of chlorine atom. The other example of sp hybridization are carbon dioxide, ethane, like this. This is all about your sp hybridization. Next I will discuss about the coordination bond. It is also called dative bond. It is also called non-covalent bond. What is the meaning of coordination bond? It is a special type of covalent bond in which shared pair of electron is contributed by one of the two bonded atoms. Suppose take an example, NH3 molecule. In NH3 molecule, there is a lone pair is present. The ammonia molecule form a coordination bond with the H plus ion to form the NH4 plus ion. Coordination bond is a special type of covalent bond. Covalent bond रे जेमती तमर शेयरिंग होची कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रे मध्ये मिले सेमती शेयरिंग हबो किंतु कोवालेंट बॉन्ड रे कोन होतिला पिले दुईटी एटम गोटी गोटी इलेक्ट्रॉन देई गोटे शेयर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करथिले आ गोटे सिंगल बॉन्ड तयारी होतिला एटे जो सिंगल बॉन्ड तयारी छि ए इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देतिला ए इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देतिला किंतु कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रे दुईटी जाक इलेक्ट्रॉन की हेले जणे दबो ए केस देखो पिले H+ ର किछि भी इलेक्ट्रॉन नाही किंतु नाइट्रोजन ऊपर सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रूपे रही अछि तेणु नाइट्रोजन एटम कोन करबो ना गोटे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दबो वर्तमान ए इलेक्ट्रॉन सपोज हाइड्रोजन पाकु गला आ हाइड्रोजन वर्तमान ए इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करबो नाइट्रोजन साथे आ नाइट्रोजन आउ गोटे जो इलेक्ट्रॉन थिला आगरो से इलेक्ट्रॉन आ सहित शेयरिंग करी तमर गोटे कोवालेंट बॉन्ड तयारी हबो तले एक्चुअली एटा को हमें ना कोवालेंट बॉन्ड कहि परिया ना हमें आयोनिक बॉन्ड कहि परिया देखो पहले नाइट्रोजन रो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कोडी गई हाइड्रोजन नाइट ता अर्थ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लॉस कला H+ तमर इलेक्ट्रॉन गेन कला किंतु से इलेक्ट्रॉन पुणी आधर पिले शेयरिंग करिया पड़छि शेयरिंग कइला माने पिले कोवालेंट बॉन्ड तेणु पिले एठी नाइट्रोजन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कला पुणी से इलेक्ट्रॉन पुणी आधर नाइट्रोजन सहित शेयरिंग कला एठारे पिले डोनेशन होतिया जो डेटिव बॉन्ड कहला एठारे जणे अन्य जण को कोऑर्डिनेट करिया जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहला पिले एटा कोवालेंट बॉन्ड नुहे किंतु कोवालेंट बॉन्ड परी तेणु आक हमें नॉन कोवालेंट बॉन्ड कहला एठारे नाइट्रोजन गोटे इलेक्ट्रॉन H+ को देला आ H+ पुणी से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन रो अन्य गोटे इलेक्ट्रॉन सहित शेयरिंग करी सिंगल बॉन्ड भलिया गोटे बॉन्ड तयारी होला हेले नाइट्रोजन रो इलेक्ट्रॉन कोडी फ्लो होला बिले
हाइड्रोजन तेणु आम एमती एरो मार्क दबा एरो मार्क कहवा अर्थ नाइट्रोजन गोटे इलेक्ट्रॉन कोडी गला ना हाइड्रोजन को गला आउ ए दुईटी जाक इलेक्ट्रॉन दिले हमर नाइट्रोजन रो एठारे शेयरिंग हेची किंतु ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दुईटी को नाइट्रोजन डोनेट करिछि तेणु को आउछि बिले इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन व्हिच shared pair of electron is contributed by one of the two bonded atom. We know that the atomic number of nitrogen is 7. There are 5 electrons present in the valency shell. There are 5 electrons present in the valence shell like this. Among the 5 electrons, 3 electrons are used for formation of single bond with the 3 hydrogen atom like this. Now this lone pair is used for the formation of coordinate bond like this. When the electron is gained by the H+ ion, then the plus charge present on the nitrogen atom. So we can write like this. Here plus charge will be written and this plus charge now present on the nitrogen atom. Because nitrogen atom loses one electron and this electron gained by the hydrogen atom and again this electron is used for sharing to form the covalent bond. The symbol of coordinate bond is written like this. This arrow mark indicates that the donation of electron from this atom to this atom. According to orbital theory, a coordinate bond is formed when an orbital of the atom having a lone pair of electrons overlap with the empty orbital of other atom. एठारे बिले नाइट्रोजन रो lone pair थिला in NH3 molecule H+ रो empty orbital थिला ए जो lone pair थिबा orbital को ए empty orbital भितर overlapping हे कि तमरो coordinate bond तयारी हेई परिला. The other example are H3O+, SO2, O3, etc. Next I will explain about the characteristics of coordination compounds. First point, coordination compound is a molecular and do not ionize in a state of fusion or solution. Next point is they are usually insoluble in water but dissolve in non-polar solvents. आमी जानी जे बिले polar solute always dissolve in polar solvent. Since the coordinate compound do not form ions, so they are generally semipolar in nature. That's why they are not soluble in polar solvent. They are soluble in non-polar solvent. आमे जानी जे बिले ionic compound गुडाक more hard and rigid होइथांदी as compared to covalent compound because the ionic bond is stronger than the covalent bond. Coordination bond पिले ना 100% ionic हेई परला ना 100% covalent हेई परला. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड केस रे बिले शेयरिंग होची आउरी मध्य डोनेशन भी हेई पारुची माने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हेई पारुची. तेनो
कोऑर्डिनेट बॉन्ड थिबा कंपाउंड गुडाक किछि कोवैलेंट कैरेक्टर देखेबे आ किछि आयोनिक कैरेक्टर देखेबे तेणु पिले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रो मेल्टिंग पॉइंट हो किंबा बॉइलिंग पॉइंट कोवैलेंट कंपाउंड आ आयोनिक कंपाउंड मझिरे थाए so we can say the melting and boiling point of coordinate compound are higher than covalent compound but lower than ionic compound. Generally पिले हमारा ionic compound गुड़ाक polar in nature होता है किंतु हमें covalent compound कथा यदि कहबा किछि covalent compound polar in nature होइथिबा बेले अन्य किछि covalent compound non polar in nature होइथाय coordinate compounds are generally shows both the properties of covalent compound character and ionic compound character so coordination compounds are semi polar in nature that means a coordinate compound are more polar than covalent compound but less polar than ionic compound. Next point is they show isomerism. These are the characteristics of coordinate compound. Next I will discuss about the condition for coordinate bond. What are the conditions for coordinate bond? First condition is a coordinate bond formed between two dissimilar or similar atoms. It can also form between a molecule and ions. माने तमे similar atom नै की coordinate bond कर परिबो किंबा dissimilar atom मान नै की coordinate bond कर परिबो किंबा तमे molecule नै की मध्य coordinate bond तयारी कर परिबो किंबा आयन को आयन नै की मध्य coordinate bond तयारी कर परिबो किंबा molecule को आयन नै की मध्य coordinate bond तयारी कर परिबो. Second condition is a coordinate bond formed between two species. Among the two species, one have at least one lone pair and other have empty orbital. We know that coordinate bond formed between two species. Suppose one species is your A, another species is your B. Among the two species, one species must have at least one lone pair. तार्थ गोटिए लोन पेयर at least रहया दरकार तार्थ दुईटा रहले मध्ये चलिबो तीनटा रहले मध्ये चलिबो. On the other hand, the other species must have empty orbital. Next condition is there is also decrease in energy during coordinate bond formation. यार मीनिंग हला बिले कोऑर्डिनेट बॉन्ड तयारी हला समय रे एनर्जी डिक्रीज करिबा दरकार. Obviously बिले यदि मॉलिक्यूल में एनर्जी डिक्रीज हला माने कोऑर्डिनेट कंपाउंड एनर्जी डिक्रीज हला ताले स्टेबिलिटी बिले इंक्रीज हबो because we know that more is the energy less is the stability. This is all about your coordination bond. Next I will discuss about the tricks. How can you calculate the hybridization of the central metal atom in a molecule? Suppose take an example. Calculate the hybridization of carbon in C2H2. For the calculation of hybridization of carbon in C2H2, we generally follow the following step. Step number 1. Calculate the valency electron of each atom present in the molecule. Then add the valence electron of each atom. Suppose the addition result is A. समस्तर valence electron add कला पर suppose से value का हमें A नबा. A equal to कौन होगा बिले? देखो बिले atomic number of carbon is 6. Electronic configuration is 2, 4. There are 4 electrons present in the valence
cell. In case of carbon, there are 2 carbon atoms present in C2H2. So here I can write 2 into 4 plus atomic number of hydrogen is 1, electron configuration is 1. There are 2 hydrogen atoms present in C2H2. So I can write 2 into 1 imply that A equal to 8 plus 2, that is 10. Remember an important point: if A less than or equal to 8, then divide the A value by 2. If A greater than 8, then divide the A value by 8. Again remember, if the remainder greater than or equal to 2, then again divide the remainder by 2. This is said to be step number 2. In this example, the value of A is 10. That means A value greater than 8. So it is bound to divide the A value by 8. So here I can write 10 divided by 8. Now put here 1. As a result, I can write here 8. The remainder is 2. Now look at that. The remainder is equal to 2. So again divide the 2 value by the help of 2. So here I can write 1. Here also I can write 2. Then the remainder is 0. Step number 3. Find the value of x. X is equal to what? This is your quotient 1, this is your quotient 2. Quotient means bhagafala, remainder means bhagashesha. So we can write x is equal to q1 plus q2 plus remainder, that is your suppose taken as that is your r2. This is your said to be r2. This remainder is considered as suppose r1. Now the value of x equal to 1 plus 1 plus 0 equal to 2. Remember an important information: if x is equal to 2, then the hybridization is Sp hybridization. If x is equal to 3, then the hybridization is your Sp2. If x is equal to 4, then the hybridization is your Sp3. If x is equal to 5, then the hybridization is your Sp3D. If x is equal to 6, then the hybridization is your Sp3D2. If x is equal to 7, then the hybridization is your Sp3D3. For this example, the x value is your 2, so the hybridization is your Sp. So here I can write hybridization of carbon in C2H2 equal to Sp. Next I will solve another problem. Find the hybridization of carbon in CO3 2-. Step number 1 is find the value of A equal to the number of valence electron present in the carbon cell equal to 4. Here 1 carbon atom, so I can write here 1 into 4. The number of valence electron present in the oxygen atom is 6. There are 3 oxygen atoms are present, so here I can write plus 3 into 6. मन रखबिले यूज गोटे नेगेटिव आयन और तार चार्ज है 2 माइनस नेगेटिव केस रे ऐड करा
कराबो पॉजिटिव केस रे सब्ट्रैक्शन कराबो रे 2 माइनस अछि अर्थ plus 2 8 कराबो so here I can write 4 plus 18 plus 2 equal to 24 the value of a greater than 8 so it is divided by 8 so step number 2 is 24 divided by 8 here I can put 3 8 into 3 equal to 24 so the remainder equal to 0 now the value of x equal to 3 plus 0 equal to 3 since the value of x equal to 3 so the hybridization is your sp2 since the value of x equal to 3 so the hybridization is sp2 next I will do another question calculate the hybridization of nitrogen in NH4 plus. Step number 1 find the value of A. The valence electron present in the valence shell of nitrogen is 5. Here the number of nitrogen atom is 1. So here I can write 1 into 5. The valence electron present in the valence shell of hydrogen is 1. Here 4 hydrogen atom present, so here I can write 1 into 4. Since it is a positive ion and the charge is your plus 1, so here I can subtract 1. Now the value of A equal to 5 plus 4 minus 1 equal to 8. Since the value of A equal to 8, so it is divided by 2. So the step number 2 is 8 divided by 2. Here I can put 4. We know that 2 into 4 equal to 8. So the remainder is your 0. Therefore the value of x is equal to 4 plus 0 equal to 4. Since the value of x is 4, so the hybridization